हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ओमनी ज्ञान। मेरे चैनल ओमनी ज्ञान में आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल बी लर्निंग द पोम एंड द नेम ऑफ द पोम इज अ रिवर written by A.K. Ramanujan. Okay, and this poem is in the additional English syllabus of class 10. Now let me tell you students, the stanzas are quite longer. Okay, so you must keep your textbooks in front of you. आप जो अपना जो विंग्स ऑफ पोइजी जो बुक है वो अपने पास रखिए. ओके, कीप द बुक in front of you. So stanza 1, I'll just read few lines, you can read the rest of the lines. So in Madurai, city of temples and poets who sang of cities and temples every summer, a river dries to a trickle in the sand, bearing the sand ribs, straw and women's hair clogging the water gates. Okay, let me read it complete for you. At the rusty bars under the bridges with patches of repair all over them, the wet stones glistening like sleepy crocodiles, the dry ones shaven water buffaloes lounging in the sun, the poets only sang of the floods. Okay, now I have not given any introduction. Actually, I have made a short analysis which will come at the end. Let us just go with the stanza explanation of the stanza. So stanza 1, explanation. Okay, so as you can see that if you open your books, okay, keep your books open. So if you see the place that the poet has mentioned, the name of the place that the poet has mentioned here is Madurai. Okay, place in South India, Madurai. Madurai is actually a very famous city and it is known for temples actually. So the poet is telling that Madurai is a city of temples and poets. Okay, lots of temples and actually there are plenty of poets in Madurai. Now what do these poets do? These poets sing about or write about. यहाँ sing का मतलब, here sing means actually write. The poets write about the beauty of the city, its temples and the river which dries up and the sand becomes visible. So what does this poet do? ये कवि जो है, ये poet जो है क्या करते हैं? These poets actually they write poems. और किसके ऊपर वो लोग poems लिखते हैं? On what do they write poems? They write poems on the beauty of the city. Okay, मदुराई city के ऊपर वो लोग poems लिखते हैं. Then they write poems on temples of Madurai, and even they write poems on the river also, which flows through Madurai. Okay, and this river has actually dried up. ये river जो है, ये नदी जो है वो सूख गया है. It has dried up. और नदी सूखने के बाद क्या होता है? What happens when the river dries? Okay, you must have definitely seen a river, and when the river becomes dry, especially winter season में होता है ये कि river जब dry हो जाता है, when the river becomes dry, then the sand comes up. अंदर का तो ज़मीन है, the land actually which lies under the water, that comes up. तो sand जो है वो बाहर निकल आता है. The sand becomes visible. Okay, and obviously the level of river water becomes very low and the sand looks like ribs of humans. तो यहाँ पे एक जो है पोइट ने एक पिक्चर खड़ा किया है. यहाँ पे एक सिमिली खड़ा किया है. यहाँ पे इट्स नोन एज सिमिली. सिमिली मतलब किसी भी दो चीज़ का कोई सिमिलर क्वालिटी या सिमिलर फिजिकल फीचर हो तो वी कॉल इट सिमिली. तो द लेवल ऑफ वाटर हैज़ गॉन डाउन, लेवल ऑफ वाटर हैज़ बिकम लो, एंड ये जो सैंड जो ऊपर आता है, द सैंड दैट हैज़ कम अप, एक्चुअली इट लुक्स लाइक एज इफ इट इज़ द रिब्स ऑफ ह्यूमंस. रिब्स ऑफ ह्यूमंस मतलब आपको पता है ना, एक स्केलेटन जो होता है, एक स्केलेटन जो होता है, जैसे ये स्केलेटन का मुंह है. ओके, और फिर रिब्स क्या होता है कि यहाँ पे जो हड्डियाँ होता है ना, दिस पार्ट इज़ कॉल्ड रिब्स. ओके, ये जो पार्ट होता है यहाँ पे फिर ऐसा ऐसा आएगा, एंड ये जो हड्डियाँ होता है, द बोन्स हियर, दीज आर कॉल्ड रिब्स एक्चुअली. ओके, सो द सैंड लुक्स लाइक रिब्स ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, इंसानों का जो पसलियाँ होता है, रिब्स होता है, वैसा ही दिखता है ये सैंड जब वो नदी से बाहर निकल आता है. ओके, नाउ बिसाइड्स द सैंड देयर आर ऑल्सो स्ट्रॉज एंड हेयर ऑफ वुमन टू बी फाउंड अंडर द ब्रिज हैविंग रस्टेड बार्स. तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. तो बिसाइड्स द सैंड, सैंड के अलावा भी, यू नो, सैंड तो ऊपर आ चुका है, द सैंड हैज़ कम अप, बट एक्चुअली बिसाइड्स द सैंड्स देयर आर ऑल्सो स्ट्रॉज. स्ट्रॉज मतलब आपको पता है, स्ट्रॉ मतलब वो पाइप वाला स्ट्रॉ नहीं. ठीक है, इट्स नॉट लाइक द स्ट्रॉ विथ विच वी ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक्स एंड फ्रूटी एंड ऑल. ओके, नॉट दैट, वो वाला स्ट्रॉ नहीं. यहाँ स्ट्रॉ का मतलब थोड़ा डिफरेंट है. स्ट्रॉ मतलब सूखा हुआ घास जो हम लोग गाय को खिलाते हैं, द वन वी फीड टू द काउज एंड लाइक बफेलोज. ओके,
ड्राइड ग्रास, ठीक है, straw. So on the sand we can find that there are straws also, or on the river, you know, there are straws also, as a dried grasses are there, okay. And even hair of women also is to be found under the bridge having rusted bars. Rusted मतलब आपको पता है जंग लग जाना किसी भी चीज़ के. Generally what happens is iron becomes rusty, okay. Iron, when iron becomes too old, then iron becomes rusty, okay. There is an outer layer which forms on the body of the iron, that is called rust, है ना. जंग लग जाना हम लोग कहते हैं हिंदी में, इन हिंदी वी कॉल जंग लग जाना, ओके. तो एक जो ये जो नदी है, द रिवर दैट फ्लोज एक्चुअली, ठीक है. अब सैंड ऊपर निकल आया है, द सैंड हैज़ कम अप, एंड ऑन द सैंड यू कैन फाइंड ड्राइड ग्रासेस, स्ट्रॉ, यू फाइंड हेयर ऑफ वीमेन, ओके, हेयर ऑफ वीमेन, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, हेयर ऑफ वीमेन. और ऊपर जो है एक ब्रिज चला गया, देयर इज अ ब्रिज गोइंग, ओके. और उस ब्रिज का जो है ऐसा रस्टी बार्स है, ओके, जिसके अंदर से पानी जो है बहता है, ओके. देयर आर बार्स which supports the bridge, and through the bars actually river water flows. So these bars have become very rusty, it is made of iron, okay. So in these bars only you find on the sand, or in these bars also you find straws and hair of women, okay. Since the bridge has become old, there are patches of repair all over the bridge. तो क्योंकि ब्रिज बहुत पुराना है, that is why you can find signs of repair. आप लोग देख सकते हैं कि कोई चीज़ जब पुराना हो जाता है ना, when anything becomes old, you find patches. जैसे कोई अगर wooden piece पुराना हो गया, तो you'll find in that wooden piece there are patches, signs actually, that shows that this wood has become very old, okay. So in this bridge also, okay, in this bridge also there are plenty of patches of repair. Maybe sometimes you know once it has happened that there were repairs, okay, repairing done to the bridge. तो ब्रिज को जो है रिपेयर किया गया है, तो रिपेयर कर, व्हेन यू रिपेयर समथिंग, नो, देयर इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा मार्क. से आपका कप टूट गया, यू ब्रेक अ कप, एंड नाउ व्हेन यू यूज़ ग्लू, अगर आप ग्लू यूज़ करते हैं अगेन टू उस कप को जो है ज्वाइन करने के लिए, इन ऑर्डर टू यू नो फिक्स द कप, इफ़ यू यूज़ ग्लू, ओके, स्टिल यूल फाइंड दैट वो जिस एरिया में वो टूटा है, द एरिया वेयर फ्रॉम वेयर इट ब्रोक एक्चुअली, यू विल फाइंड मार्क्स देयर. इवन आफ्टर जॉइनिंग ऑल्सो यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ मार्क्स देयर. तो दीज मार्क्स एक्चुअली इन गुड इंग्लिश यू कैन से पैचेस, ओके. तो रिपेयर मार्क्स जो होता है, दोज रिपेयर मार्क्स could be seen, those repair marks could be seen over the bridge also, ठीक है, because it is a very old bridge. So these rusty bars makes it difficult for the water to flow freely. तो ये जो rusty bars है, you know, these bars, ये bridge का जो bar है, okay, so these are the bars, okay, these are the bars, and water flows from here actually, okay. Now what happens is that because the bars have become very old, because the bars of this bridge have become rusty, so what happens is that the water that flows through the bars actually is blocking the water. These bars are actually making it difficult for the water to flow freely, ठीक है. जो पानी जो बहता है इन बारों के बीच से, तो क्योंकि ये बार्स बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए क्या होता है कि वाटर जो फ्लो करता है ना, ये फ्रीली जो है फ्लो नहीं कर पाता बिकॉज ऑफ द रस्टी बार्स, ठीक है. तो नाउ द पोएट इज ऑल्सो टेलिंग दैट, द पोएट इज ऑल्सो डिस्क्राइबिंग दैट ऑन द वाटर बॉडी यू फाइंड वेट स्टोन्स ऑल्सो. आपको गीला गीला पत्थर दिखता होगा ना. इवन यू हैव सीन द स्ट्रीम्स ऑल्सो, नॉर्थ ईस्ट इज एक्चुअली हब ऑफ स्ट्रीम्स. आप मेघालय में जैसे कि हम लोग मेघालय में रहते हैं, आप लोग ने देखा होगा मेघालय इज़ फेमस फॉर स्ट्रीम्स, राइट, ओके. तो मेघालय इज़ वेरी वेरी फेमस फॉर स्ट्रीम्स. तो उन स्ट्रीम्स में आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन ऑन द स्ट्रीम्स दैट देयर आर स्टोन्स. पत्थर होते हैं लंबे लंबे बड़े बड़े जो है पत्थर होते हैं, बिग बिग स्टोन्स, ओके. तो यहाँ पे भी जो है हियर ऑल्सो इन दिस पोम टू द पोएट इज सेइंग दैट देयर आर वेट स्टोन्स. और ये वेट स्टोन्स कैसा दिखता है, हाउ डज द वेट स्टोन्स लुक, इट लुक्स लाइक स्लीपिंग क्रोकोडाइल्स. जो मगरमच्छ जो है पानी के अंदर सोते हैं, द क्रोकोडाइल्स विच
sleep under the water with half of their body just on the top of the water, है ना, थोड़ा सा बॉडी जो है क्रोकोडाइल पानी के बाहर निकाल कर रखता है अपना अपना। तो ये वेट स्टोन ऐसा दिखता है जैसे कि द क्रोकोडाइल्स आर स्लीपिंग, एक्चुअली देयर आर क्रोकोडाइल्स विच आर स्लीपिंग बट एक्चुअली दीज आर वेट स्टोन्स। तो ये तो गया वेट स्टोन्स। नाउ देयर आर सर्टेन स्टोन्स विच आर ड्राई ऑल्सो विच लाई नियर द बैंक ऑफ द रिवर। ये तो नदी का पानी है एंड दिस इज द लैंड पार्ट, दिस इज द लैंड पार्ट, सो यू फाइंड स्टोन्स हियर ऑल्सो। ठीक है, तो जो गीला पत्थर है द वेट स्टोन्स, दीज लुक्स लाइक स्लीपिंग क्रोकोडाइल्स। ओके, बट व्हाट अबाउट द ड्राई स्टोन्स? द ड्राई स्टोन्स एक्चुअली लुक्स लाइक बफेलोज एज इफ दे आर टेकिंग सन बाथ। हम लोग बीच पे जाके है ना सन बाथ लेते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ये television या pictures में, you must have seen pictures in pictures or in television videos also that people taking sun bath on sea beach, है ना। तो the wet stone looks like sleeping crocodiles and the dry stones looks like buffaloes. buffaloes मतलब सांड जो होते हैं, okay, buffaloes as if they are taking sun bath। तो देखिए स्टोन्स को किस तरीके से पोएट जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है। वेट स्टोन्स लुक्स लाइक स्लीपिंग क्रोकोडाइल्स एंड ड्राई स्टोन्स लुक्स लाइक buffaloes who are taking sun bath। ठीक है, then the city poets, actually the poet is talking of the Madurai poets। our poet here A.K. Ramanujan is speaking about the Madurai poets। okay, तो here sometimes I will mention you new poets, city poets। ठीक है, आप लोग confuse मत होइएगा, don't be confused। okay, so the city poets actually कुछ जो famous जो poets है in Madurai, they write on the flood that occurs during the rainy season। तो वो लोग कभी कभी फ्लड के ऊपर भी लिखते हैं जो रेनी सीजन में ऑकर करता है। तो आप लोग समझ गए, अंडरस्टूड दैट द सिटी पोएट्स एक्चुअली वो लोग लिखते हैं फ्लड के ऊपर भी लिखते हैं। जो रेनी सीजन में तो फ्लड होता है, you every year it occurs in our country that during rainy season there is tremendous flood all over the country, especially plain areas जो है। hilly areas we have landslides, but plain areas there are plenty of floods actually and very destructive in nature। anyways let's continue। the poet complains that these city poets, a poet जो है हमारे जो poet है, our poet actually, he is complaining that these city poets have written poems describing the beauty of flood। now look at the statement of our poet, हमारे जो poet है, our present poet, he is saying that the Madurai poets, okay, the poets in Madurai, they write poem describing about beauty of flood। now tell me students, can flood be beautiful? आपको लगता है कि flood beautiful हो सकता है? never। flood is never beautiful, rather flood is destructive। flood destroys everything, people become homeless, okay, and flood causes so much of destruction, people become homeless, people die, people don't have food for week after week, people do not have food, okay, so many troubles occur because of flood। how can poets describe flood as beautiful? so this is what our present poet is complaining, that the Madurai poets, they describe flood as beautiful, okay, and they celebrate about flood, and this is very wrong according to our poet. This is a very wrong attitude। now the Madurai poets, they are writing about the beauty of flood, but they have not written anything about the destructions caused due to flood। तो पोएट ये कहता है कि आप बैलेंस रखिए, ओके, डोंट ओनली क्रिटिसाइज। हम लोग कहते हैं ना, मैंने पिछला जो एक वीडियो बनाया था, आई टोल्ड यू देयर दैट वी आर नोबडी टू क्रिटिसाइज एनीवन, एंड इफ यू क्रिटिसाइज समबडी, प्रेज हिम ऑल्सो। एक बैलेंस रखना चाहिए, वी मस्ट कीप अ बैलेंस। व्हेन यू टेल समथिंग, व्हेन यू टेल बैड अबाउट समथिंग, टेल गुड अबाउट दैट थिंग, so that a balance is maintained, एक balance रहे। तो the poet is telling that the Madurai poets actually, they speak only about the beauty of the flood in their poems। अपने कविता में वो सिर्फ फ्लड को जो है ब्यूटीफुल कह रहे हैं, ओके, बट दे हैव नेवर रिटन एनीथिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शंस कॉज ड्यू टू फ्लड। कभी फ्लड के बारे में खराब नहीं लिखा। दिस इज रॉन्ग, फ्लड कॉजेज सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शंस, ओके, दिस इज व्हाट आवर पोएट कंप्लेन्स। फाइन, I hope you have understood। now stanza 2, he was there for a day। अब he कौन? he is actually the poet, and A.K. Ramanujan is actually speaking in third person। here he is actually A.K. Ramanujan only,
but Ramanujan is like presenting another character, and through that character Ramanujan is speaking, AK Ramanujan is speaking. Okay, so it's third person. Okay, so he here is our present poet only. He is our present poet. Now he was there for a day. Now this poet was actually there for a day. There here is Madurai. There का मतलब यहाँ पे मदुराई. ठीक है, तो he was in Madurai. The poet was in Madurai for a day when the flood had occurred. Now I'll be explaining you. Okay, let me read the lines. People everywhere talked of the inches rising. Inches rising here is the inches water rising. Okay, water rising inch by inch, of the precise number of cobble steps run over by the water rising on the bathing places, and the way it carried off 3 village houses, 1 pregnant woman, and a couple of cows named Gopi and Brinda as usual. तो यहाँ पे जो है the poet is talking about the destruction caused by flood, because it is only our poet who is speaking of the tragedy. The other poets, the Madurai poets, the famous Madurai poets, they are not talking anything bad about or the destruction caused by the flood. They are not speaking anything at all. Okay, but here the poet is actually raising the issue that how tragedy is caused, or what kind of tragedies are caused by flood. So during the time of flood, the poet says that he was in the city for a day when the flood had occurred. तो कवि जो है वो मदुराई में था जब ये फ्लड आया था, when the flood had occurred, and people everywhere talked of the water which was gradually rising higher and higher. तो सब लोग जो है आसपास, you know, all the people around there, they were talking that you see, I saw the water rising slowly, the water was rising higher and higher and higher and higher, and then the flood, finally the flood occurred, the flood happened. Okay, flood came. Then they also talked of the number of steps where people took bath. These steps also submerged in the water. Submerge means to go down, sink, डूब जाना. मैं आपको इसका जो explanation है, this explanation I'll show it through a picture. Okay, let's go to the next slide. Here I'll show it to you through a picture. See, these are the steps. Actually, see, और भी steps है नीचे, there are more steps. Okay, but these steps, when actually flood came, actually slowly the water covered these steps. So slowly water will rise. Okay, it will cover this step, then this one, then this one, then this one, then this one. Okay, and finally the water will all spread all over the city Madurai. See, this is Madurai city. Okay, so these steps were submerged inside the river water. तो ये जो सीरिया है, आप जो सीरिया देख रहे हैं ना, ये स्टेप्स, ये जो है पानी के अंदर डूब जाएंगे जब फ्लड का वाटर धीरे धीरे करके ऊपर आएगा. ठीक है, सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आप लोगों को समझ में आ गया? you definitely understood. The flood also carried off 3 villages. Now the poet is talking about what kind of destructions the flood has caused. क्या क्या destructions flood लाया. तो फ्लड ने क्या किया? द फ्लड एक्चुअली कैरिड ऑफ 3 हाउसेस. 3 घर को वो फ्लड जो है पूरा बहा के लेके चला गया. इट कैरिड अवे 3 विलेज हाउसेस. देन 1 प्रेग्नेंट वुमेन वॉज देयर. एक जो है गर्भवती महिला थी, 1 प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो, वो भी जो पानी के साथ बह के चला गया. शी ऑल्सो गॉट स्वेप्ट अवे बाय द वाटर. देन देर वे 2 काउज. 2 गाय था. ओके, गोपी एंड बिरिंदा नाम का 2 काउस था. There were 2 cows named Gopi and Birinda. They were also washed away. वो भी जो है पूरे flood water उनको भी बहा के लेके चला गया. तो you see 3 important destructions caused by the flood. 3 village houses washed away. 1 pregnant woman washed away, and 2 cows naming Gopi and Brinda, they also got washed away. Okay, so the poet, we can say that the poet in the second stanza thus describes the destructions caused by flood. तो ये तो मदुराई पोएट नहीं करेंगे. मदुराई पोएट, दे आर सेलिब्रेटिंग फ्लड, एंड फ्लड इज नथिंग टू बी सेलिब्रेटेड. सो हियर इज वेयर आवर पोएट एक्चुअली कंप्लेन्स कि व्हाई आर द मदुराई पोएट सेलिब्रेटिंग फ्लड, whereas flood is causing so much of destructions. Okay, so in the second stanza basically our poet describes the destructions caused by flood. But the city poets, you see here, this is what our poet is complaining, that the city poets, the Madurai poets, are very much indifferent. They have ignored
they're indifferent to the tragedy that is caused by flood, and they are in fact romanticizing the flood. आप फ्लड के ऊपर कोई रोमांटिक कविता लिख सकते? कैन यू राइट एनी रोमांटिक स्टोरी और एनी सेलिब्रेटिंग स्टोरी और पोम ऑन फ्लड? ऑब्वियसली इट इज इम्पॉसिबल. अ फ्लड दैट कॉजेज सो मच ऑफ डिस्ट्रक्शन. ओके, मैंने अभी अब आपको कहा कि कितने लोग बेघर हो जाते हैं, पीपल डाई, पीपल डोंट गेट फूड, यू नो, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते से लेके महीना जो है लोगों को खाना नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ फ्लड. दे आर केप्ट इन शेल्टर्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट. ओके, कैंप्स, यू नो, टेम्पररी कैंप्स मेड फॉर द फ्लड विक्टिम्स, है कि नहीं? तो हाउ कैन यू रोमांटिसाइज फ्लड? दिस इज व्हाट आवर पोइट इज कंप्लेनिंग, दैट द सिटी पोइट्स आर एक्चुअली इग्नोरिंग द ट्रेजेडी and they are romanticizing the flood, which is very very wrong. अब हम लोग आते हैं स्टैंजा 3 पे. The new poets still quoted the old poets, but no one spoke in verse of the pregnant women drowned with perhaps twins in her, kicking at blank walls even before birth. ओके, अब यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा छोटा सा स्टैंजा था. अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग स्टैंजा 3 का. नाउ हियर द न्यू पोइट्स हु आर ऑफ द सेम टाइम एज द पोइट, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है? दिस इज कॉल्ड कंटेम्पररी पोइट्स. ओके, आई विल टेल यू लेटर, लिटिल लेटर. तो दिस न्यू पोइट्स एक्चुअली स्पोक ऑफ द ओल्ड पोइट्स एंड कोटेड देम. अब देखिए, ये जो नए पोइट्स है, द मदुराई पोइट्स, दे आर न्यू पोइट्स, फ्रेश पोइट्स. तो दे एटलीस्ट हैव लिटिल मैनर दैट दे समटाइम्स कोट, दे समटाइम्स स्पीक अबाउट द ओल्ड पोइट्स ऑल्सो. पुराने जो फेमस पोइट्स हुआ करते थे, इनको जो है हमारे नए पोइट्स इनके बारे में कभी कभी बात कर लेते हैं. इन देयर पोम्स दे समटाइम्स कोट द लाइन्स ऑफ द ओल्ड पोइट्स ऑल्सो. चलो ठीक है, मान लिया, क्वाइट गुड, एटलीस्ट दे आर लिटिल सिविलाइज्ड इन दिस, यू नो, इन दिस एस्पेक्ट. बट एक्चुअली बात क्या है? बट नो वन इज एवर टॉकिंग अबाउट द प्रेग्नेंट वीमेन. अरे वाई, व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड टॉकिंग अबाउट द ओल्ड पोइट्स? Talk about the pregnant women who got drowned. उनको rather जो है, these new poets, they must talk about the pregnant women who was drowned with twins in her belly. Just imagine a pregnant woman drowning in the river, and the pregnant woman was having twin babies inside her belly, inside her womb. And those, you know, बच्चे जो है जब बड़े होते हैं ना पेट के अंदर, जब थोड़े बड़े होते हैं माँ के पेट के अंदर, तो दे स्टार्ट किकिंग द, यू नो, किकिंग इनसाइड द वूम. तो दीज बेबीज माइट हैव बीन किकिंग इनसाइड द वूम, एंड इवन बिफोर बर्थ they died before coming to the world. So we can imagine that with the pregnant women, the twin babies also died. जन्म लेने से पहले ही ये जो twin babies है ये मर गए along with the pregnant mother. So our poet is expecting that the old poets at least write one line about her and her babies who were, you know, who were killed by the flood. No, the new poets are completely ignoring the tragedy, the death of the women and the death of the twin babies inside, and they are only talking about the old poets and they are quoting them. ये बात बहुत गलत है. दिस इज अ वेरी रॉन्ग एटीट्यूड. दिस इज व्हाट आवर पोइट इज कंप्लेनिंग. स्टैंजा 4, which is the last stanza, he said the river has water enough to be poetic only once a year, and then it carries away in the first half hour 3 village houses, a couple of cows named Gopi and Brinda. So the name of Gopi and Brinda comes again here. Actually the poet is repeating what he has said before, because the poet is very much hurt that nobody has spoken of Gopi and Brinda, nobody has spoken about the 3 village houses that got washed away, nobody is speaking of the pregnant women with the twin babies, nobody is talking. Okay, and one pregnant woman expecting identical twins with no moles on their bodies, with different colored diapers to tell them apart. तो stanza 4 में क्या होता है आप देखिए. The poet again refers to himself using the third person he. तो poet फिर से जो है अपने आप को वो ही कह के इंट्रोड्यूस कर रहा है. एक्चुअली ही हियर इज आवर पोइट. ओके, आवर पोइट. अकॉर्डिंग टू आवर पोइट द रिवर इज पोएटिक, और इन अदर वर्ड्स द रिवर कैन बी रोमांटिसाइज्ड ओनली वंस ए ईयर. से फॉर एग्जांपल फ्लड का टाइम जो है, यू नो, द टाइम ऑफ फ्लड, दिस इज नॉट द टाइम टू बी रोमांटिक. दिस इज नॉट द टाइम टू बी रोमांटिक. साल में जो है हम रिवर के ऊपर
There are plenty of seasons we have. Spring season we have, winter season also we have. So we have so many seasons, right? So the our poet is telling that these new poets, they can romanticize the river during any month. But why during the time of flood? क्यों फ्लड के टाइम, है ना? फ्लड के टाइम में वो लोग क्यों लिखते हैं? एंड वाई आर दे बिकमिंग रोमांटिक अबाउट द रिवर? सो वी कैन रोमांटिसाइज रिवर ओनली वंस अ ईयर. ओके, हम लोग एक बार ही रोमांटिक हो सकते हैं. वाई ऑल द टाइम बिकम रोमांटिक अबाउट द रिवर? लेट्स टॉक अबाउट द ट्रेजेडी ऑल्सो. एंड देन इन जस्ट हाफ एन आवर यू सी कि फ्लड आने से पहले जब रिमझिम बारिश होता है तो कितने गाने बने हैं ना. सो मेनी सॉन्ग्स हैव बीन मेड ऑन रेन, राइट? So many songs have been made on rain, and actually these are very romantic songs. You must have seen in TVs also, in movies also. But after half an hour, see, you sing a very romantic song, and just after half an hour flood comes. And don't take it otherwise, I'm just kidding, okay? And you see everything is washed away. कैसा लगेगा फिर? आपने आधा घंटा पहले जो रोमांटिक गाना ख़त्म किया रेन के ऊपर, और आधा घंटे बाद जो है आपको पूरा पानी आपको बहा के लेके चला गया. कैसा लगेगा? हाउ विल इट लुक? It can happen to anybody, right? It can happen to anybody, and there is nothing to romanticize about it. It's a tragedy. Tragedy must be spoken in terms of tragedy only. You cannot romanticize tragedy, right? तो in half an hour it takes away 3 houses. 3 घर जो है बह के चला गया. Couple of cows, Gopi and Brinda also gone, washed away. Pregnant women also washed away, and she was expecting twin babies, and they were having very fair bodies actually. Okay. They were of fair complexion, those twin babies, because mother was fair, so maybe children will also be fair. It was expected like that. Okay. And look at the mother. You know, when a child is born, a mother has so much of dreams that when my son will be born, or when my twin babies will be born, मैं ऐसा ऐसा नाम रखूँगी, I will keep these babies name like this and these babies name like this. And you see, she was also thinking of having diapers of different colors. The twin babies actually are identical, no? Twin babies look same. So how will you identify the twin babies? So the mother was thinking that I will buy them different color diapers. डायपर तो आपको पता है, वो जो बच्चे जो टॉयलेट करते हैं तो डायपर पहना कर रखते हैं उनको रातों को. तो यू सी द मदर वॉज प्लानिंग, नो, फॉर वन बेबी आई विल बाई से रेड कलर डायपर, एंड फॉर द अदर बेबी आई विल बाई अ वाइट कलर डायपर, सो दैट आई कैन आइडेंटिफाई देम, ताकि मैं उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकूँ. बिकॉज चेहरे से तो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, राइट? चेहरे से तो उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता. मदर कैन नॉट आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर फेसेस, फ्रॉम देयर लुक्स. सो बेटर आई बाई 2 color diapers, okay, so as to distinguish between them, because the twins do not have any mole to identify them. तो कभी कभी क्या होता है कि चेहरे पे मोल होता है ना, say this is a face and you have mole on your forehead. एक तिल होता है ना, mole on your forehead. अब दूसरा जो twin baby है, he does not have any mole. So from the mole also you can be identify कि his name is John, his name is Tom. लेकिन अगर दोनों के चेहरे पे कोई मोल नहीं हुआ तो how will you identify? Okay, so the mother decided, because the 2 babies did not have any identical marks, any mole on their face or on any part of their body, so the mother thought I will buy them different colored diapers. इसको याद रखिएगा. The last stanza thus compares and contrasts the writing of the poet himself and other poets of his age. तो यही difference है between our poet and just write our poet versus Madurai poets or city poets. क्या डिफरेंस है दोनों में? द डिफरेंस इज ही हैज़ टेकन अप अ वेरी सीरियस इशू. He has taken up a very serious issue, and what is the issue? The tragedy caused by flood. And these poets, they are romanticizing flood. They are romanticizing flood, and this is the difference between the 2 class of poets. So our poet, we can say our poet is the best actually, not the Madurai poets. बिकॉज दे आर फॉल्स पोइट्स. ये लोग झूठे पोइट्स हैं. ये लोग सिर्फ जो है पैसा कमाने के लिए पोइट्री लिखते हैं. दे राइट पोइट्री टू अर्न मनी, दे राइट पोइट्री सो दैट दे कैन बिकम फेमस. बट आवर पोइट इज एक्चुअली इज नॉट ग्रीडी फॉर मनी, इज नॉट ग्रीडी फॉर नेम, इज नॉट ग्रीडी टू बिकम फेमस. ही हैज़ टेकन अप अ वेरी सीरियस इशू. ठीक है ना? दिस इज द डिफरेंस. ओके, सो
the writing manner of both the poets are very different, and obviously if we compare we'll see that our poet seems to be, not seems to be, our poet is the best actually. ठीक है? So on one hand, all the other poets try to praise the beauty of the river. It is good to praise the beauty of the river. Rivers are so beautiful. The poet is telling that praise. Our poet is telling that you praise the beauty of the river. I don't have any problem. मुझे कोई problem नहीं है कि आप river से, आप river की जो है तारीफ करेंगे. मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है. I don't have any complaint. But at the same time, you talk about, you see, and on the other hand, our poet himself makes a balance between beauty and the losses inflicted on the people by it. तो पोएट, हमारे पोएट जो है, आवर पोएट इज टेलिंग दैट मुझे कोई कंप्लेन नहीं है कि आप रिवर के ब्यूटी के बारे में आप तारीफ़ कीजिए, आप कीजिए तारीफ़, कोई दिक्कत नहीं. बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो टॉक अबाउट द लॉसेस ऑफ द ट्रेजेडी विच द रिवर हैज़ कॉस्ट. तो ब्यूटी ऑफ द रिवर जो है, यू राइट पोम ऑन दिस, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो टॉक अबाउट द ट्रेजेडी एंड ट्राई टू कीप अ बैलेंस. आप एक बैलेंस रखिए. आप क्यों सिर्फ ब्यूटी के बारे में बात करना चाहते हैं? वाई डू यू ओनली वांट टू टॉक अबाउट द ब्यूटी ऑफ द रिवर? टॉक अबाउट द ट्रेजेडी ऑल्सो विच इज कॉज्ड व्हेन देयर इज फ्लड. ओके, सो आवर पोएट इज़ वेरी अनहैप्पी विद द सिटी पोएट्स. हमारे जो पोएट है ये बहुत अनहैप्पी है ऑन द सिटी पोएट्स. ऑलराइट, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग. नाउ अ वेरी शॉर्ट एनालिसिस आई हैव मेड. प्लीज ट्राई टू पे अटेंशन टू दिस. ओके, here you see, तो after reading the whole poem, what do we understand about the poem? कविता जो है बहुत simple है. Lines are very simple. It seems that as if a description is going on. See, look at the lines. It does not look like a pure poetry. ये pure poetry जैसे होता है ना, ऐसा नहीं लगता है कि pure poetry में rhythm होता है, rhyme होता है. But here it is not like that. But let me tell you, A.K. Ramanujan is one of the famous poets actually. It's one of the famous poets in India. Okay. और इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश जो है कभी भी मास्टर डिग्री में पढ़ाया जाता है तो A.K. रामानुजन इज़ हैज़ टू कम एक्चुअली. ओके, A.K. रामानुजन के बिना इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश इज़ इनकम्प्लीट. नाउ हियर यू सी द पोम अ रिवर एनालिसिस. ओके, द पोम अ रिवर रिटन बाय A.K. रामानुजन डिस्क्राइब्स द कोल्डनेस और इंडिफरेंसेस ऑफ न्यू पोइट्स टुवर्ड्स द हार्श रियलिटी ऑफ द थिंग्स दैट दे रोमांटिसाइज. तो इसको आप जो है एग्जाम में लिख सकते हैं. It's a kind of an analysis. You can write, you can use this in your exam writing also. Now, A.K. Ramanujan, he's here describing the coldness or the indifferences of new poets towards the harsh reality of the things that they romanticize. तो यहाँ पे A.K. Ramanujan complain कर रहा है about the indifferences, about ignoring what? Ignoring the harsh reality of the things. And instead of talking of the harsh reality of things, they are actually romanticizing those things जिनसे हमें दुख पहुंचता है, things which cause tragedy. These new poets are actually praising those things. अब देखिए, जो चीज़ हमें तकलीफ़ पहुंचाता है, क्या आप उस चीज़ के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे? विल यू टेल गुड थिंग्स अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग विच कॉजेज ट्रेजिडी? डेफिनेटली नॉट. That is what our poet here A.K. Ramanujan is actually complaining कि न्यू पोएट जो है, जो चीज़ हमें तकलीफ देता है, न्यू पोएट्स उसी के बारे में तारीफ़ कर रहा है. एंड इट इज़ वेरी बैड, राइट? द पोएट ऑल्सो एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ द न्यू पोएट्स कॉपिंग द आइडियाज़ एंड वेज ऑफ द ओल्ड पोएट्स. तो यहाँ पे जो है, ये जो न्यू पोएट्स है, एट वन प्लेस आई हैव सेड नो दैट न्यू पोएट्स एक्चुअली दे कोट द ओल्ड पोएट्स. दे आर कोटिंग द ओल्ड पोएट्स. दे आर नॉट एक्चुअली कोटिंग द ओल्ड पोएट्स. दे आर कोटिंग द ओल्ड पोएट्स. वो लोग कोट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो लोग क्या कर रहे हैं? दे आर कॉपिंग द आइडियाज़ ऑफ द ओल्ड पोएट्स. द पोएट एक्सप्रेसेस हिज कंसर्न अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ द न्यू पोएट्स एंड they are actually copying the ideas and ways of the old poets. These old poets were very genuine, genius. And our new poets, they are duplicate. हमारे जो नए poets हैं, these new poets, they are duplicates. ये लोग नकल कर करके कविता लिखते हैं. They copy ideas and they write poems. They don't have any innovativeness inside. अपने अंदर कोई जो है creativity नहीं है. They don't have any creativity inside them. They just copy ideas, they just copy the lines, the meanings, and they use it in their poems to earn money, to sell their poetry, to get famous, but they don't have any creative ideas. They are stealing the ideas of the old poets. Plagiarism.
Okay. Then he also speaks of their inability to create something which is about the present rather than the past. So A.K. Ramanujan also says that these new poets actually they are incapable of creating any new thing. Alright, and that new thing should help us in the present. But these poets are talking only about the past. These new poets are talking things only about the past. They don't write, or they don't think, or they don't introduce to the present things. Rather they only talk about the past, and which is not going to help. आप अगर सिर्फ पास्ट 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 को लेके चलेंगे वो आपकी मदद नहीं करेगा. आपको प्रेजेंट में जीना. यू मस्ट लिव इन द प्रेजेंट. हम लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो है हम लोग आइडियाज़ लेते हैं. कहाँ कहाँ मैंने मिस्टेक गलती की इन द पास्ट, वेयर आई मेड मिस्टेक्स, आई मस्ट रेक्टिफाई इट एट द प्रेजेंट. आपको प्रेजेंट टाइम में जीना चाहिए रादर के पास्ट का आप चिंता कर रहे. तो these new poets actually talk only about the past. They never talk about the present. That is what A.K. Ramanujan complains. Alright, so this is the poem. I hope you have liked the poem, you have understood the poem. And again, once again, feel free to comment if you have not understood any aspect of the poem. Please feel free to comment in the comment box. Okay, I'm always there to respond to your questions. So kindly subscribe to the channel, like and share my videos, and share my videos with all your friends so that they also can get the benefit, maximum benefit from my explanations. Okay, so that's all from me for today. Thank you so much for watching the video. With love, Omni Gyan, and all the best.